हाय देयर, आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा हो बिकॉज वी आर लेस देन 1 मंथ अवे फ्रॉम द MBA CT 2026। ये टाइम पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी आ सकता है बिकॉज वी ऑलवेज थिंक दैट ऑलमोस्ट 1.5 लाख पीपल register for the exam and there are just a few hundred seats in the top colleges through CET. तो how is it going to work and the odds are stacked against you? तो कैसे हो पाएगा ये? तो I made this video ताकि आपको थोड़ा सा better feel हो, because with this data I am going to show you that the real competition in the CET is less than what you think. So let's get started. तो करियर्स 360 के साइड पे ऑल्दो 2025 सीईटी का डेटा नहीं है, बट वी हैव डेटा फ्रॉम 2019 टू 2024। 2024 में आप दे सकते हो दैट ऑलमोस्ट 1.3 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, बट ओनली 14% स्टूडेंट्स एक्चुअली केम एंड गेव द एग्जाम। 2023 में 10% स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, 2022 में 21% स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, 2021 में 10% स्टूडेंट्स, 2020 में 11% स्टूडेंट्स एंड 2019 में 8% स्टूडेंट्स डिड नॉट इवन मेक इट टू द एग्जाम सेंटर। सो एनीवेयर बिटवीन 10 to 20% स्टूडेंट्स एग्जाम देने ही नहीं आने वाले हैं। सो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन इज much lesser. Now, if we look at the students who actually attempt the exam, many students are just giving the exam very casually without preparation. यही प्रूव करने के लिए मैंने लास्ट ईयर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था. I made a whole video on this, but I had marked C in all the questions of the MBA CET and I ended up getting a 31 percentile. So out of the number of test takers, 30% students you can easily beat by just marking blind flukes, which means that if you take the percentage of absentees and the total number of test takers, you can easily beat around 30 to 40% of students just like that. आपको कुछ effort भी डालने की जरूरत नहीं है to beat 30 to 40% of students. Now, from my experience, and obviously इस पे exact data नहीं है, out of the rest of the people also, just imagine if you take educated guesses, you can beat much more people than the 30% I mentioned. If you have taken even one mock, you can beat so many more people. But if you have taken mocks, analyze them, improved your mistakes, study consistently, then just imagine कि कितने कम percentage लोगों ने ये किया होगा. And this is why I always say that scoring 85 percentile, 90 percentile, 95 percentile in CET is not that difficult. Even if you take your first mock today and in the next few days analyze them, improve your mistakes, you can get above 85 percentile, above 90 percentile in the CET. So I hope this video helps. Do not worry about the competition. Just focus on yourself, your preparation, your mocks, your mock analysis, your improvement. These numbers, the competition will not matter. अपने से compete करना है, आपके मिस्टेक से compete करना है, आपके प्रोक्रास्टिनेशन से compete करना है, आपकी गलतियों से सीख के बेटर होना है. एंड ट्रस्ट मी, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द नंबर सीन्स, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द क्वेश्चंस और द एग्जाम सीन्स, getting into your dream college is possible. Thank you so much for watching. Do subscribe to the channel if you like the video, and to ensure कि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो about MBA CET, about JBIMS, because we'll be covering everything on this channel. I'm Aditya Sridhar. I'll see you guys in the next video.